हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एपिस्टेक्सिस. एपिस्टेक्सिस का मतलब नोज ब्लीड होता है. इट इज़ अ हेमरेज फ्रॉम नोज. वाई इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू रप्चर ऑफ टाइनी डिस्टेंडेड वेसल्स एंड वेर इट इज़ हैपनिंग इन द म्यूकस मेम्ब्रेन. What are the sites of epistaxis? It could be anterior ethmoidal artery, that is Kesselbach's plexus. ये आपको याद रखना है because it could be asked in MCQ. Secondly, it could happen in spinopalatine artery, that is posterior to the nasal. Then thirdly, it could happen in maxillary branches, that is posterior and lateral wall की तरफ होता है ये. Nextly, risk factors क्या है? It could happen due to a local infection, that is due to rhinitis or sinusitis. Then systemic infection, that is due to malaria. देन ड्राइंग ऑफ द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन. ड्राइंग होने के बाद अगर नोज पिकिंग कोई करता है देन इट कुड हैपन. नेजल इनहेलर के कारण हो सकता है. ट्रॉमा, दैट इज डायरेक्ट हिट टू द नोज. हाइपरटेंसिव और ट्यूमर में हो सकता है. यूज ऑफ एस्पिरिन, दैट इज ब्लड थिनर विच कुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. देन लिवर डिजीज में हो सकता है. मेडिकली हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? दैट इज आइडेंटिफाइंग द साइट ऑफ ब्लीडिंग. किधर हो रहा है वो पहले आइडेंटिफाई करना है. देन डायरेक्टली वी नीड टू अप्लाई द प्रेशर टू द नोज, दैट इज द सॉफ्ट आउटर पोर्शन को. ये अभी कैसे करेंगे हम? वी नीड टू सिट इन अपराइट पोजिशन. देन हम लोग को हेड है ना थोड़ा टिल्ट फॉरवर्ड करना है. एंड देन वी नीड टू पिंच द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द नोज for about 10 to 15 minutes, and then it could be followed by application of nasal decongestants. अगर ये सब करने के बाद भी if the bleeding doesn't stop, we need to do suction to determine the site of bleeding. किधर origin किधर है bleeding का हमें find out करना है. then cauterize with silver nitrate और electrocautery हमें करना पड़ता है. नेक्स्टली ऑल्टरनेटिवली सपोज वो करने से नहीं स्टॉप हो रहा है, वी आर गोइंग टू यूज अ कॉटन tampons to be cotton tampons can be used. So if the origin is not identified, then use of gauze impregnated with petrolatum jelly or antibiotic ointment to pack the nose. nose को हमें पैक करना पड़ेगा. और that could be balloon inflated catheter that can be used. Now these all are done under topical anesthetic spray and decongestants. Now the packing with whatever we are doing, it has to be kept for 3 to 4 days. Now हम nurses का इसमें क्या रोल है? We need to monitor the vital signs, assure that the patient is calm, because bleeding देख के patient could become anxious. So we need to make sure the patient remains calm. Assess the airway and breathing, because हम लोग nasal पैक हम लोग इंसर्ट करेंगे. सो वी नीड टू असेस फॉर द ब्रीदिंग. रेयरली कभी ज़्यादा ब्रीदिंग होने के कारण वी नीड टू प्रोवाइड IV crystalloid, that is sodium. Advise the patient to avoid vigorous exercise, avoid hot or spicy foods, avoid forceful nasal blowing, straining, high altitude nasal picking. These are to prevent the further rebleeding. So educate humidification to prevent the drying of the nose. This is done to maintain the mucosal membrane moist. Thank you everyone. That's all for today.